तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज गाइस मैं देखने जा रहा हूँ व्हाट डिड एशियन ह्यूमंस डू एट नाइट। देखते ना भाई एशियन ह्यूमंस ने क्या किया था नाइट में भाई। और ये रैंडम मुझे मिला है एक, तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं एशियन ह्यूमंस। We are imbued वी आर इम्ब्यूड विथ एडवांस पावर एंड फॉरगॉटन। Light will flood the room and you won't think twice about it. भाई इसने कुछ तो क्रेजी बनाया वीडियो। For 99.9% of human history, that switch didn't exist. When the sun set, the world went dark. भाई मतलब अपन कितने ज़्यादा लक्की लोग हैं भाई। अपन अपने अपने बारे में तो अपनी बात ही अलग है, पता है क्या, सच्ची बता रहा हूँ। अपन लोगों की बात ही अलग है भाई। अपन कितने लक्की लोग हैं। अपने लिए लाइट का बटन दिया है, अपने लिए चैट जीपीटी है, अपने लिए सब कुछ दिया हुआ है। उन लोग को लिए तो उन लोग सोचते बैठते होंगे उन लोग कि भाई हम लोग करें तो करें क्या। हम लोग के पास तो चैट जीपीटी भी नहीं है। क्या क्या उन लोग अपन को कुछ भी जैसे डाउट आया फटाक से गूगल करके सीख लिया। अरे हाँ यार ऐसा ऐसा है मेरी ज़िंदगी में और मैं इसको क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो चैट जीपीटी पूरा आंसर ही निकाल के दे देता है आपकी ज़िंदगी का। और क्या चाहिए भाई आपको, स्विच बटन, लाइट मिल गया भाई, पंखा मिल गया, एसी मिल गया, गर्मी में भी एसी मिल गया, भाजी सड़ता नहीं है, फ्रिज मिल गया, सब मिल गया। और क्या चाहिए भाई तुमको। भाई कितने लक्की हो भाई तुम लोग, लक्की लक्की हो बहुत ज़्यादा। वॉट डिड एशियंट ह्यूमंस डू एट नाइट। क्या करते होंगे भाई अंधेरे में, बताओ आप। You couldn't even see your own hand in front of your face. But modern humans almost never experience this. For over 300,000 years, every single one of your ancestors spent roughly half their life in near total darkness. They didn't उन लोग के लिए लाइट ही नहीं था उन लोग के पास। have candles for most of that time, just the black sky, the stars, and whatever fire they could keep alive. So, what did they actually do for all those hours? The answer changes everything we think we know about sleep, storytelling, and what it means to be human. Let's start with fire, because fire is the reason any of this was possible. The earliest solid evidence of humans controlling fire comes from Wonderwork Cave in South Africa, roughly 1 million वंडर वर्क केव इन साउथ अफ्रीका, years ago. But fire 1 मिलियन ईयर्स अगो। just keep people warm. Fire completely restructured the human day. Before fire, our ancestors were like every other primate. When the sun went down, you climbed a tree or found a sheltered spot and you stayed still. Moving at night meant becoming food. Our eyes are terrible in the dark compared to the predators that hunted us. Leopards, hyenas, wolves. हाँ ना, अंधेरे में सब जानवर देख भी लेते भाई अंधेरे में। अपन इंसान थोड़ी देख पाते अंधेरे में। All of them see just fine. Fire changed that equation overnight. Literally. A campfire creates a circle of safety roughly 30 feet in diameter. Inside that circle, predators won't come. Outside that circle, you die. This क्या डेंजर सीन था रे भाई, क्या डेंजर सीन था। is not an exaggeration. एग्जैगरेट नहीं कर रहा है भाई, वो चीज़ों को सच बता रहा है भाई। दुनिया ऐसी चलती थी, नेचर के लॉ पे चलना पड़ता था भाई पहले। Anthropologists studying modern hunter-gatherer groups have documented that people who wander away from the fire at night are significantly more likely to be killed by predators, even today. But here's what's fascinating. Fire didn't just protect humans at night. It gave them something they'd never had before: extra hours. Think about this. Before fire, the useful day ended at sunset. That's maybe 12 hours in summer, as few as 8 in winter. Fire suddenly added 2 to 4 usable hours to every single day. And over thousands of generations, those extra hours changed our species. In 2014, anthropologist Polly Wiesner published a study in the Proceedings of the National Academy of Sciences. She spent years recording conversations among the Jew/Huansi Bushmen of the Kalahari Desert, one of the last groups on Earth still living something close to the original human lifestyle. She found was striking. During the day, about 80% of conversations were practical. Who's hunting where? Which plants are ready? Complaints, logistics, economic negotiations. भाई अभी भी उतने पुराने ज़माने के लोग अभी भी जिंदा है भाई। Time अभी भी जिंदा है और एक टापू पे अभी भी जी रहे भाई। और उनके ऊपर रिसर्च हुई है कि उन लोग किस तरीके से उनका दिनचर्या होता था, उन लोग क्या करते थे। तो उन लोग डे टाइम पे प्रैक्टिकल रहते थे। was work. But at night around the fire, the entire character of conversation changed. At night, 81% of conversations were stories. तो भाई बॉन फायर लगाए तो स्टोरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई। इसको बताओ यार कोई तो यार,
इसको क्या अभी पता चल रहा है? बॉनफायर लगा है भाई, बातचीत होगी भाई किस्सों के बारे में। हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, आज तो मैं तुझे ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा। मैंने भी ऐसी सब स्टोरी सुनी है भाई बहुत, बॉनफायर लगा लगा के। बॉनफायर लगा लगा के नहीं सुनी है, पर बॉनफायर लगा के सुना, शायद बातचीत हुआ है, पर ऐसा स्टोरीज वोरीज भी सुना रहेगा थोड़ा बहुत, मुझे याद नहीं है। पर बॉनफायर लगा के भाई वही सब बात होगा ना भाई, और कौन सा बात होगा? रात के टाइम पे तो यही बात होता है, बॉनफायर लगा या मत लगा। रात के टाइम पे बैठ के मस्त 4-5 दोस्तों में, हाँ तेरे को पता है क्या भाई, बचपन में तो कितना स्टोरी सुनते थे भाई, रात को ही बैठ के सुनते थे भाई, दोपहर को तो किसी को मज़ा नहीं आता था, रात को फीलिंग आता था। हाँ पता है क्या भाई, ऐसा हुआ था, तेरे को पता है मेरे घर पे ऐसा सीन है, मेरे पापा ने मुझे ये स्टोरी बताया, ऐसा हुआ था उनके साथ में, जा रहे थे इधर उधर, ये कर रहे थे। बहुत स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आता था मुझे वो टाइम पे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था बहुत। of people in distant places, adventures, myths about the origins of the world, jokes that made the whole camp laugh. Weisner argued that firelight conversation is where human culture was born. The campfire was the original theater, the original classroom, the original church. It's where humans learned to think beyond the immediate present and क्या डेंजर चीज़ बता रहे हो भाई ये? imagine things that don't exist yet. It's where we became us. But the night wasn't just about stories around the fire. There was something else happening, something that scientists only rediscovered in the last 30 years. You were ये ऐड वाले क्यों बीच बीच में आ जाते हैं यार मेरे पास? भाई क्या डेंजर चीज़ बता रहा है भाई यार, इंटरेस्ट लो ये सारी चीज़ों में, क्या बता रहा है वो? बोल रहा है कि आगे ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से रात का टाइम और आगे ऐसी चीज़ थी, जब अपन सर्कल लगा के बैठे थे उसकी वजह से जो दुनिया की बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, और मुझे भी सच लगता है वो बात। सोचना, इनोवेशन, वही पहला क्लासरूम था अपना फायर, जिस जंगल में आप बैठा करते थे पहले अपनी पुराने वाले जन्म में, वही जंगल, वो जंगल में जब बैठा करते थे तुम आग लगा के, मस्त दाढ़ी बीड़ी बढ़ा के बैठा करते थे जंगल में, मस्त भाला बिला लेके, और फिर सोचते थे हाँ 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 हूँ। तूने आज क्या खाया? तूने क्या खाया? मैंने मच्छी खाई। तूने क्या खाया? मैंने केले खाए तोड़ के। तूने क्या खाया? मैंने कच्चे टमाटर। लेमन टटीटा कच्चे टमाटर खाए भाई साहब। फिर एक दूसरे पे हंसते थे बैठ के, फिर डिस्कशन होते होते सोचते थे यार क्या ज़िंदगी होती था ना यार, लाइट होती थी तो शायद मैं लाइट को ला दूँ कुछ तो करके। फिर वही कौन सा तो एप पैदा हुआ लगता है आइंस्टाइन बन के, और उसने फिर लाइट का डिस्कवरी किया, ऐसे कुछ तो हुआ है भाई। Historian Roger, you were not designed to sleep the way you sleep right now. In 2001, historian Roger E. Kirch published a paper that changed sleep science. He had spent 16 years digging through historical records, and he found something nobody expected. Over 500 references, spanning centuries, prayer books from the 1400s, court records, diaries, medical texts, letters from ordinary people, even passages in Homer's Odyssey. All of them mentioned the same thing: first sleep and second sleep. Before the industrial age, people did not sleep in one continuous block. They went to bed shortly after sunset, slept for about 4 hours, then woke up. They stayed awake for 1 to 2 hours in the middle of the night. Then they went back to sleep for another 4 hours until dawn. This wasn't insomnia. This was normal. This was how every human on the planet slept for thousands of years. And what did people do during that wakeful period in the middle of the night? Everything. A 16th century French physician recommended that couples conceive children during this window because they would do it better. People visited neighbors. वाह मार्कस। They interpreted their dreams while they were still fresh. They wrote. They simply lay in bed in the dark and thought. A doctor's manual from the 1500s advised patients that the best time to study and reflect was during the watch, as they called it, the quiet hours between first and second sleep when the mind was calm and the world was still. Now, historians had been reading these references for centuries, but they kept translating first sleep as something else, because they couldn't imagine that people ever slept differently than we do now. The assumption was so deep that translators literally mistranslated ancient Greek and medieval Latin to make it fit their modern experience. ये भाई बहुत गलत ट्रांसलेट करके रखा है भाई इन लोग ने।
But then science confirmed what history had been saying all along. In 1992, psychiatrist Thomas Ware at the National Institute of Mental Health ran an experiment. He took a group of volunteers and removed all artificial light from their lives. For 1 month, they experienced 14 hours of darkness every night, just like our ancestors would have before fire extended the evening. Within weeks, every single participant settled into the same pattern: 4 hours of sleep, 1 to 3 hours of quiet wakefulness, then 4 more hours of sleep. Nobody told them to do this, nobody suggested it. Their bodies just did it, as if some ancient program had been waiting inside them the whole time. भाई साहब मतलब रात को जागना Buried under centuries of artificial light. Ware measured their hormone levels मतलब क्रिएटिविटी आती है लगता है during the wakeful period and found something remarkable. The participants were in a state unlike any normal waking state. Their brains were producing elevated levels of prolactin, the same hormone released during meditation and after orgasm. They described feeling peaceful, reflective, almost meditative. It wasn't just a gap in sleep, it was its own distinct state of consciousness, one that most modern humans have never experienced. So what killed it? The answer is simpler than you'd think. Light. In the 1600s, cities began installing street lamps. Paris was one of the first under Louis XIV, who wanted to reduce crime. London followed. The night, which had been a place of danger and fear, slowly became 1600 में लाइट लगा था भाई पहला 1600 Then came cheaper candles, then gas lamps in the 1800s. Then, in 1879, Thomas Edison commercialized the electric light bulb, and within a generation, the night as humans had known it for 300,000 years was gone. And here's the part nobody talks about. The word curfew comes from the French couvre-feu. It literally means cover fire. In medieval towns, a bell would ring at night signaling everyone to cover or extinguish their fires. Not because of safety, because night was supposed to be dark. Night was when you slept. Night was when you were vulnerable. For most of history, being out at night was suspicious. In many medieval European cities, walking outside after dark without a lantern was literally illegal. Night belonged to criminals and the supernatural. People feared it in a way that's almost impossible for us to understand today. And then we conquered it. We flooded it with light, and we thought that was progress. But here's what we lost. Modern humans are exposed to artificial light an average of 7 to 8 hours after sunset. This light, especially the blue light from screens, suppresses your body's production of melatonin, the hormone that regulates sleep. Your body doesn't know the difference between a light bulb and the sun. When light hits your retina at 11 p.m., your brain interprets it as daytime. It delays melatonin release. It भाई क्या डेंजर चीज बोल रहे भाई ये तो your sleep. It disrupts the circadian rhythm that evolved over millions of years. Research मतलब रात को आप फ़ोन चलाते हो ना गाइस वो फ़ोन मत चलाओ रात को भाई क्योंकि अपने जो ब्रेन है गाइस वो इंटरप्रेटेड ही नहीं कर पाता दोनों में से डे लाइट कौन सा है और स्क्रीन का लाइट कौन सा है ये ब्लू लाइट भी उसको सेम ही लगता है भाई मुझे पता नहीं था गाइस मुझे आज पता चला है भाई ये चीज़ तो रात को जब अपन फ़ोन यूज़ करते ब्रेन को ऐसा लगता है कि भाई अभी तो दिन ही चल रहा है उसकी वजह से अपना स्लीप साइकिल ख़राब होता है इसके लिए बोलते हैं 2 घंटा पहले फ़ोन दूर रखो सोने के पहले बट सुनता नहीं है कोई सुनता है found that people who go camping for just 1 week with no artificial light at all मतलब बोलने का भाई का उसका पर्पस क्या पता है क्या अगर गाइज आप वो बोल रहा है कि अगर आप को प्रोडक्टिविटी चाहिए आपके ब्रेन के साथ में और क्रिएटिविटी चाहिए तो रात को 2 घंटे जागो 4 घंटा सो 2 घंटे जागो 4 घंटा सो ऐसा वो बोल रहा है उसके बाद में देखो आपकी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी आ जाएगी ऐसा बोल रहा है बट इंडिया में गाइस इंडिया का अलग सिस्टम है इंडिया का सिस्टम तो आपको पता ही है गाइस इंडिया का सिस्टम है एक कुछ आपको पता ही होगा इंडिया ब्रो इंडिया का भी सिस्टम है एक आपको पता है इंडिया का सिस्टम क्या है इंडिया के सिस्टम से भी चलोगे ना गाइस तो कहीं से कहीं पे पहुंच जाओगे कहीं से कहीं पे सीधा प्रोडक्टिविटी लेके पहुंच जाओगे cycles reset by nearly 2 hours. Their bodies start producing melatonin at sunset instead of hours after it. That's all it takes for 300,000 years of producing melatonin at sunset instead of hours after it. That's all it takes for 300,000 years of programming to reassert itself. We didn't just change when we sleep. We eliminated an entire phase of human consciousness. That quiet, reflective state between first and second sleep, the state that Ware's subjects described as peaceful and meditative, doesn't exist anymore for most people. Instead, we have insomnia, and we treat it like a disorder.
सोना खाना भाई, सोना खाना सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। सोना और खाना, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे रहना। What if it's not a disorder at all? What if waking up at 2 a.m. and lying there in the dark isn't your body malfunctioning? What if it's your body remembering what it was built to do? For 300,000 years, your ancestors spent their nights in a rhythm that modern सबसे सबसे डेंजर सीन तो भाई, science is only beginning to understand. They gathered around fires and told stories that built civilizations. They slept in two phases with a window of quiet reflection in between. They lived in darkness so complete that the Milky Way wasn't something you had to drive to a national park to see. It was just the sky. And every night when they woke in the dark between first and second sleep, they lay there in silence and thought about their lives, their dreams, and the world they would wake up to in the morning. We traded all of that for a light switch. And most of us इसका बोलने का मतलब तो सही था भाई, दिमाग लगा के बोल रहा है। बट गाइज अपनी किस्मत बहुत अच्छी है। ये एक तरीके से ये बंदा सोच रहा है, बस एक तरीके से सोच रहा है। सोचो गाइज, अगर ये बोल रहा है कि लाइट नहीं चाहिए थी इसको, जंगल में इसको ही छोड़ देते थे सबसे पहले। अपन बॉनफायर लगाते थे जंगल में और इसको ही बैठा थे सबसे पहले, ले भाई तू बॉनफायर के बाजू में बैठ और अभी तू एक्सप्लोर कर। चीता वीता नहीं देखते बॉनफायर विनफायर भाई, वो दूर से बैठ के नज़र रखते हो मस्त। हाँ बेटे, अच्छा तो बॉनफायर लगा के बैठेगा रात को। लोग ऐसे ही घरों के अंदर नहीं घुस के बैठते भाई, रात को सीधा उठा के लेकर जाते हैं उन लोग। अच्छा बॉनफायर लगा के बैठेगा, चल आज बॉनफायर लगा के बैठ, आज बॉनफायर लगा के बैठा। और उन लोग को ईगो आता है भाई, फटक से ईगो आता है उन लोग को, मेरे से कंपटीशन कर रहा है। अच्छा लगा बॉनफायर, चल आज बॉनफायर लगाया, दूसरे दिन बॉनफायर लगाया, तीसरे दिन बॉनफायर लगाया, चौथे दिन बॉनफायर लगाया, पाँचवें दिन बॉनफायर लगाया, 2 घंटे के बाद में बॉनफायर जब बुझ गया, ले भाई इसको भी बुझा दिया। कितने लोगों को बुझा दिया रहेगा भाई जानवरों ने रात को। उल्टा लाइट है इसीलिए अपन गाइस अभी क्या क्या कर पा रहे, क्या क्या कर पा रहे हो आप रात को अंधेरे में लाइट की वजह से, आपको भी पता है। सायोनारा।